नाम से है। हाँ ठीक, ऑन कर दो, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो यश। ये भी आप ही का है क्या, दीप्ति के नाम से? प्रियांशी, हाँ, दूसरे वाले लैपटॉप से ज्वाइन किया है। इस वाले लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं तो हम नहीं मोबाइल नहीं, से ज्वाइन किया है। अच्छा। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। प्रणाम सर। प्रणाम रखा मैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। और सब उज्जवल जी ठीक है? जी सर, बढ़िया, सब बढ़िया। नाथ सर नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। योर मोस्ट वेलकम मैडम कस्तूरी मुखर्जी, रेखा मैम, आप सबका स्वागत है। रेखा मैम, हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, परफेक्ट है सर।
हमारे साथ ज्वाइन किए गए सभी टीचर्स का बहुत बहुत स्वागत है। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बस कुछ ही पल में हमारे यह कार्यक्रम आरंभ होगा, जिसे संचालित करने का जो कार्य है वो प्रोफेसर निहाल अहमद करेंगे, जो इस समय स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा। दरअसल मैम लिंक की वजह से लोगों को जुड़ने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी। जी सर, उसमें एक्चुअली क्या है ना कि लिंक को कॉपी पेस्ट करना होता है, और हम लोगों की आदत है कि सीधे डायरेक्ट ब्लू लिंक पे क्लिक किया, वो डायरेक्ट जो है ओपन हो गया। इसीलिए बिल्कुल मैंने वही बिल्कुल। रिक्वेस्ट किया था कि उसको उस हिसाब से डाल दिया जाए। और रामेश्वर सर का भी फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि हम अपना जितना भी पर्सनल ग्रुप है उसमें हम इन्फॉर्म कर देते हैं। जी, मैंने भी उसमें फॉरवर्ड कर दिया था। जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और एक इन्फॉर्मेशन जो है मैं देना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा की तरफ से। कुछ पिछले कार्यक्रमों में यह संभव नहीं हो पाया था, बट इस कार्यक्रम की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफेसर निहाल अहमद जी ने ली है, और उनका ये कहना है कि ये कार्यक्रम के जितने प्रतिभागी हैं उनको 10 दिन के अंदर ई सर्टिफिकेट, 10 दिन के अंदर क्या, आप प्रयास यही किया गया है कि फीडबैक फॉर्म के उपरांत ही आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे साथ प्रतिभागी जुड़ गए हैं वो अपने लोगों को अगर फॉरवर्ड कर सके तो वो फॉरवर्ड कर दें, बिकॉज हमारे साथ जो हमारे रिसोर्स पर्सन है आज जुड़ चुके हैं, और बहुत मेहनत से जो है रिसोर्स पर्सन हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मैडम। Good morning. Am I audible clearly? यस यस यस। Okay. We are left of only few minutes, then will be started. I just want to check if the screen sharing is working properly or not. Can I do one trial? ओके मैम। Okay.
Is my screen visible? Yes, yes. So Clearly. just let me confirm one thing. Can you change the changed slides? I'm changing my slides. Can you see these changes? This is a clear, ma'am. You Hello. can see the changes now. कस्तूरी मुखर्जी जी, हेलो कस्तूरी मुखर्जी जी, वेलकम। कैसी हैं? कैसी हैं आप? ठीक Sir, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Yes, sir. Sir, how are you? चलिए, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम। रेखा श्रीवास्तव जी स्वस्थ रहने के नाते भी दिखाई दे रहे हैं, सब लोगों को बधाई। चलिए, बहुत बहुत सर नमस्कार। रेखा मैम, प्रिंसिपल सर नहीं जुड़े हैं क्या? सर अभी तो दिख नहीं रहे हैं प्रिंसिपल सर। हाँ, जुड़ गए। हाँ जुड़ गए। प्रणाम सर। प्रिंसिपल सर भी हम लोग साथ जुड़ चुके हैं। सर को वेरी गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल सर। अखिलेश तिवारी सर को नमस्कार। अखिलेश तिवारी सर को नमस्कार। सारे ज्ञान शाम नागरे सर जुड़ गए। तुलका सिन्हा को भी वेलकम। आई थिंक हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। इट्स 11। यस। प्रिंसिपल सर नजर नहीं आ रहे। प्रिंसिपल सर है, स्क्रीन पे हैं सर जी। तो शुरू की जाए? जी सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू। Honorable Vice Chancellor and Patron in Chief Professor Harman Prasad Pandey, respected Chairperson and Principal of Government Degree College, Bagaha, Badgaon, West Champaran Bihar University, Muzaffarpur, our eminent speaker, respected Professor Ras Bihari Prasad Singh sir, former Vice Chancellor, Patna University and Nalanda Open University, our guest of honor, Professor Sarfraz Alam sir, Department of Geography, Banaras Hindu University, Uttar Pradesh, and our special speaker and energetic speaker, Associate Professor Dr. Kasturi Mukherjee, Head of Department Geography, School of Basic and Applied Sciences, Advanced University, Kolkata, West Bengal, and our energetic organizing secretary, Dr. Sandeep Kumar Singh, Head of Department Hindi, Government Degree College, Bagaha, our college faculty members, our prestigious scholars, and all professors and lecturers, media person, ladies and gentlemen. I am Nihal Ahmad, Assistant Professor, Department of Geography, Government Degree College, Bagaha. You are warmly welcome from the boundless depth of my heart. First of all, warm greeting to all of you on the occasion of International Biodiversity Day. आप सभी को पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। तो इस मौके पे गर्मजोशी के साथ मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं।
हम लोग का ये जो टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, तो जैसा कि हम सबको पता है कि बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या होता है। एक सिंपल सी बात है, मैं एक कोट करूं एक बात को, उसी बात में आप समझ जाइएगा कि क्या होता है। उसके बाद हमारे पास तो ऐसे ऐसे स्पीकर्स हैं जो क्षमा बांधने के लिए तैयार हैं। तो जैव विविधता के संबंध में लाल बहादुर शास्त्री साहब की हाजिर जवाबी मुझे याद आ रही है। उनके एक बार अंग्रेज मित्र ने उनसे पूछ डाला कि अरे यार शास्त्री, तुम लोग भी अजीब भारतीय हो, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई टोपी पहनता है, कोई धोती पहनता है, कोई पजामा पहनता है, कोई लुंगी पहनता है। अरे यार हम लोग देखो अंग्रेजों को बिल्कुल गोरे चिट्टे हैं, लंबे छरहरे हैं, सब हैट पैंट टाई का इस्तेमाल करते, सब एक जैसे। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा कि माय डियर, जितने भी गधे होते हैं एक जैसे होते हैं, लेकिन जो घोड़े होते हैं, हॉर्स होते हैं, वे अलग अलग रंग रूप के होते हैं और ये उनकी प्रगति का सूचक होता है। तो माय डियर, हमारी जो जैव विविधता है, हमारे इस पर्यावरण में, हमारे इस इन्वायरमेंट में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे ये सारी कायनात में मौजूद हैं, वही तो उसकी खूबसूरती है, वही तो हमारी जैव विविधता है। लेकिन ये जैव विविधताएं डिपेंड करती हैं किस बात पर? तो हमारे इन्वायरमेंट के हेल्थ पर, हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य पर। हमारा इन्वायरमेंट जितना हेल्दी होगा, हमारा यह डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी है, उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, सब इसमें विद्वान रिस्पेक्टेड सर लोग हैं, इसमें मौजूद है, विद्वान फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आप सबको पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स है, उनके इंटरेक्शन से बनता है। जो जैविक और अजैविक घटक हैं, उनके अंतर क्रिया का परिणाम होता है, और सब एक दूसरे से इंटरलिंकेज है, सब एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध में ठीक वैसे ही गुथा हुआ है जैसे हमारे गले में कोई मोती का माला हो, और अगर कोई एक मोती उसमें से टूट जाए तो यकीनन वह माला बिखर जाएगा। तो अगर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में, हमारे इकोसिस्टम में इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, सपोज जैसे हम लोग देखते हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, ये अजैविक घटक होते हैं। लेकिन भले ही अजैविक घटक होते हैं, लेकिन ये बेस होता है, क्योंकि जब तक एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में नहीं मिलेंगे तब तक बायोटिक कंपोनेंट्स की ओरिजिन नहीं हो सकती। जब मिट्टी, जल, वायु सारी चीजों का सम्मिश्रण होगा तब जाके हमारा क्या बनता है, हमारा जैविक कंपोनेंट्स बनता है, बायोटिक कंपोनेंट्स बनता है, और उस बायोटिक कंपोनेंट्स में हम इंसान भी शामिल है, जीव जंतु भी शामिल है, पेड़ पौधे यानी वेजिटेशन भी शामिल है। और ये कितनी सुंदर बात है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वह हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है? सनातनी संस्कृति है, सनातन धर्म है। और आपको ये बात की, इस बात की जानकारी होगी कि हमारी संस्कृति में ये बात सबसे पहले इस चीज को उठाई गई थी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है ठीक वैसे करना है जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें। और ये कब संभव है? जब हम अपने इस इन्वायरमेंट को, अपने इस पर्यावरण को बेहतरीन और अच्छे ढंग से रख पाएंगे। ठीक ऐसी ही बातें बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में भी बातें हैं। अहिंसा की बातें सबसे ऊपर रखी गई है। तो अहिंसा केवल ऐसा नहीं कि किसी जीव की हत्या कर रहे हो, अगर हम किसी पेड़ पौधे को भी काट रहे हो वो भी अहिंसा है, क्योंकि सभी चीजें जिसमें अगर जान है तो अगर उसको हम काटते हैं तो हिंसा हो रही है, और सब एक दूसरे से हमारा इंटरलिंकेज है। उसी तरीका से मैं
तफ्तीश कर रहा था, मैं खोज कर रहा था कि हमारे सनातन धर्म में तो इस तरह की बातें हैं, बौद्ध धर्म में भी है, क्या इस्लामिक जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, क्या उसमें भी इस तरह की कुछ बातें हैं? तो मैंने ढूंढते ढूंढते पाया उसमें कुरान की एक आयत थी सूरह रहमान, और सूरह रहमान में उसमें हमको बहुत सारी बातें मिली जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कही गई है। उसमें ये बातें स्पष्ट रूप से है कि हमारा जो पर्यावरण है, परमपिता परमेश्वर ने हमें क्या किया है, पेड़ पौधे दिया है, फूल पत्ते दिए हैं, जड़ी बूटियां दिया है, इंसानों को दिया है, सारी चीजों को, पूरी कायनात को बनाया है, लेकिन हमें नसीहत दिया है कि हम अपने रिसोर्सेज को उसी हद तक, उसी लिमिटेशन तक इस्तेमाल करें जिस लिमिटेशन तक हमारा यह इकोसिस्टम बैलेंस रह सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो माय डियर, हमारे साथ बहुत सारे हमारे स्पीकर्स मौजूद हैं और इन्हीं सारी बातों पर, इन्हीं सारी पहलुओं पर हमारे स्पीकर्स अपनी बातों को रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं अपने मोस्ट एनर्जेटिक स्पेशल स्पीकर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कस्तूरी मुखर्जी मैडम को। और मैं ये बता दूं कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की है, इन्होंने जो अपना एक लेवल स्थापित किया है, इनकी जो रिसर्च है विदेशों में, स्वीडन से लेकर अलग अलग देशों में हो रही हैं, और अब तक इन्होंने 5 पुस्तकें भी लिखी हुई हैं और बेहतरीन एक स्पीकर्स हैं। इसलिए एक जोरदार क्लैपिंग तो बनती है मैडम के नाम पर। इसलिए कस्तूरी मैडम, मोस्ट वेलकम, प्लीज कस्तूरी मैडम। Thank you, sir, and very good morning to all the dignitaries present here, principal sir, and all the sir and ma'ams, and all their students who are present in this webinar. And a special thanks to Dr. Ahmed for inviting me and giving me this opportunity. I'm overwhelmed by this introduction. So, okay, it's not that I'm just trying to contribute something to the field of geography, and I'm a teacher in Adamas University, and I teach both UG and PG level. So today I'll be talking about biodiversity in general, the basic things of biodiversity, and I hope that this lecture will be beneficial for the students. This is mostly for the students, and this will be beneficial for the students who has biodiversity as their subjects. So I just share my screen and I will start my presentation. So just let me know if the screen is visible. Yes, ma'am. Okay. And can you see the second slide? और उसके साथ साथ जो रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी लगभग Which one, ma'am? 2 महीने से ज्यादा हो, 3रे महीने में चला गया। Hello. कालिक रूप Yes, से ma'am. लग रहा था कि रूस से बहुत जल्दी So I just wanted to ask that केवल can you see the second slide of my presentation, biodiversity slide? Yes, ma'am. Continue, ma'am. So already Nihal sir has explained what is biodiversity, and he has explained in a very beautiful way what biodiversity is. And of course, I will not repeating this thing. I just want to say that yes, biodiversity is the combination of all the species, insects, plants, animal, human beings living on the Earth surface. It is the variety of life that exists on our Earth. And you will be surprised to know that I have got this data that there are around 8.7 million species of plants and animals that exist on our Earth, but only about 1.8 millions have been identified. So you can imagine lot of millions of species are there which are yet to be identified. So biodiversity is the variety of life, and how we measure this variety of life? We measure the variety of life by measuring the number of species. So there are different measures, different ways of measuring the number of species. So I would like to
give you a brief overview that how this measurement is possible. And please, if you have any question, my request is that please stop me and ask me. So there are two types of measurement techniques that I am going to discuss today. One is functional categories, functional techniques by which we can measure the biodiversity, and that is classified into ecosystem biodiversity, species biodiversity, and genetic biodiversity. Another method is the theoretical methods, which in which we have alpha index, beta index, and gamma index. Kasturi ma'am, slides are not changing. Yes, ma'am. Oh, okay. You're not running, ma'am. Actually, it's fifth slide. I was having this confusion that whether the slides are changing because I am unable to share my full screen. I just try once. Ma'am, now the slides are changing? Yes, ma'am. Yes. Okay. Sorry. So this was the first slide of definition of biodiversity, and this was I was saying that how we measure this biodiversity by counting the number of species. And there are different ways of measuring biodiversity. One is functional and one is theoretical ways of measuring biodiversity. Now functional classification of biodiversity. So first one is the genetic biodiversity. Second is the species biodiversity, and third one is the ecosystem biodiversity. This also Nihal sir has explained that human beings also differ in how they look. कोई लंबा है, कोई थोड़ा सा उससे हाइट में कम है, कोई बहुत ज्यादा गोरा है, कोई कम है, किसी का ओवल शेप का हेड हो सकता है, किसी का थोड़ा सा विड्थ ज्यादा हो सकता है. तो दिस वैरायटी of genetic composition within a species is called genetic diversity. Like human being, if we consider human being as a species, there are different types of human beings are available. That is, the difference is because of the genetic composition. Similarly, if we take the category of dog, there are various type of dogs available that we call genetic diversity. Now, next is the species diversity. This is the easiest one. Species diversity means that there are various species. Like human being is one species, dog is another, cat is another, bird is another. So there are different species available on the earth surface, and their diversity is termed as the species diversity. And another one is the ecological diversity. As we know that there are many ecosystems on the earth surface, and varieties of the ecosystems, like if we say desert ecosystem, that is completely different from the rainforest ecosystem. So this variety is called ecosystem diversity. Now coming to the measurements of biodiversity that we measure through alpha, beta, and gamma index. Mostly there are other indices as well, but today I will discuss only these three. So let us see. So suppose there is one mountainous areas. Consider there is one mountainous areas, one mountainous ecosystem. In this mountainous areas, there will be different type of patches. There can be somewhere can be patches of grassland, somewhere can be patches of forest. So these patches or a small area within one ecosystem, if we count the variety of species within that small area, it is called alpha diversity. So alpha diversity is the species diversity present within one small patch. So if you see my screen, if you can see this picture, there are 4 patches demarcated by dotted red lines. Can you see that? Yes. Okay. So if we count the species diversity, if we count the number of species within each this patch, it will be counted as alpha diversity. It is as easy like this. Then beta diversity is the comparison of the diversity among these patches. So if we want to compare that इस patch में diversity ज़्यादा है कि इस patch में ज़्यादा है, so that comparison will be counted as the beta diversity.
And if we want to see the diversity of the entire ecosystem, entire mountainous ecosystem, then it will be called as gamma diversity. I will show another example of for a better understanding of this. So suppose these are the 3 patches, these are the 3 samples we are surveying, and 3 samples are within one particular ecosystem. So within each sample, there are species that are demarcated by different symbols. So as you can see, sometimes there are overlap, like similar symbols used in site A and site B. Like this yellow cross is present in site A and site B both. This half green circle is present in site A and site C. So there are some common species and there are some unique species as well. So if we want to calculate the alpha diversity, we have to just count the number of species present in each site. So in site A, if we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 type of species are present in site A. So alpha diversity of site A will be 7. Alpha diversity of site B will be 5. Again for C, it will be 7. So this is how we count the alpha diversity. Now, if we want to plot after this, we know now the number of species. So if we want to plot the species, it will be something like this. So 7 species in site A, 5 species in site B, in which 2 are common, and again 7 species in site C. Now, how can we calculate the beta diversity? For beta diversity, we have to compare 2 sites together. We can compare only 2 sites together. So beta diversity will be calculated between site A and B, B and C, and A and C. In this way, we calculate the beta diversity. And for beta diversity, we will not consider these overlapping species, which are common species. We will not consider. We will only consider what unique species. So let's count that how many unique species are present between A and B. So if we count 1, 2, 3, 4, 5, these are not unique. So 5, 6, 7, 8. So total 8 species are present uniquely between site A and site B. So the beta diversity of site A and B will be 8. So in this way, we calculate the beta diversity between B and C and also A and B. So you can calculate by yourself as well by seeing this picture. It's very easy. And we get this number that A versus B, there are 8 unique species. B and C को compare करेंगे तो 6 species मिलेगा जो unique होगा, ये दो और ये दो. और A and C को compare करेंगे तो total 8 species मिलेगा जो कि unique होगा. So we are excluding the common species. So the beta diversity is highest in case of A versus C. Its 10 unique species are present there. And if we want to calculate the gamma diversity, we will now, in case of gamma diversity, we will not exclude anything, but we will also not count twice the common species. The common species will be counted only once. So gamma diversity will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Common species will be counted, but counted once. So 12 is the number of gamma diversity. So any question you have up to this, please put the question in chat box or ask me. I'll love to reply. Now coming to the threats of biodiversity. So major threats that over the last half a decade biodiversity is facing is the loss of land, fragmented land, unsustainable resource use, invasion of species, pollution, global climate change, and because of rapid urbanization, because of rapid population increase, biodiversity, there are rapid destructions of ecosystem as well. So this is a great threat to the biodiversity, because what is happening that the ecosystems are becoming fragmented, ecosystems are becoming, ecosystems are destroyed. So there is less chances of reproduction for the plants and animal species.
Sometimes overexploitation. Overexploitation occurs when organisms are removed from their habitat in a much faster rate than viable population can be sustained. Much faster rate में उसका exploitation हो रहा है, then the population can reproduce and replenish the gap. So, like example, the exploitation includes the elephant poaching for their ivory. This is overexploitation, or overfishing, or irresponsible hunting for meat. This all comes under overexploitation. Climate change, climate change is related to the occurrence of various kind of natural calamities like hurricane, more frequency of hurricane, more frequency of volcanic eruption, more frequency of wildfire, more frequency of cyclones are happening, you can see, and there are heat waves. So this put the biodiversity under stress, and already those species which are under stress because of some human intervention, because of habitat loss, they are already in stress. Such kind of natural calamities put them in more stress and they become endangered. Pollution also creates, like acid rain creates a lot of destruction of biodiversity. Eutrophication, which is the highest stage of water pollution. If a water body reaches to the level of eutrophication, what happens is that there is no dissolved oxygen. There is yes. Your slide share is not showing. Slides are not showing. No, ma'am. You cannot see my slide. Slides are not running, ma'am. स्लाइड दिखाई दे रही है मैम. हाँ, क्या हुआ? स्लाइड दिखाई दे रही है मैम. दे रही है. हाँ, मैंने चेंज नहीं किया. एक ही स्लाइड में 5 पॉइंट्स है, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. हाँ जी मैम. Yes. Okay. So eutrophication, as I was saying, is the highest form of water pollution. उसमें क्या होता है, पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और aquatic animals they die because of the absence of oxygen. Invasion of some kind of species into an ecosystem, they are also a threat to the biodiversity loss. So why we are so concerned about this biodiversity, and today is World Biodiversity Day we are celebrating here, because biodiversity provides us so many things. A healthy, functional ecosystem play a crucial role in sustaining human livelihoods through providing necessities and benefits such as food, water, energy resources. They provide carbon sequestrations, they provide oxygen, they fix nutrients, they remove the pollutants, and they help the plants to grow. They keep the pests and diseases in check. They protect us from flooding and related natural calamities, and they overall help to regulate the climate. These all are the ecosystem services that we derive almost every day from biodiversity. And one study, you wouldn't believe that one study estimated that if we want to, as we are destroying biodiversity, if someday we have to artificially produce this thing, artificially produce all the ecosystem services that we get from biodiversity, that will be over $1,000 trillion of global economy, which is even double of the world's gross domestic product. So we basically can't do this. We basically can't replace the ecosystem services that is provided naturally from the natural ecosystem. So for this, we need to preserve our biodiversity. And we all are aware about the Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals is a framework, that's a global goals to address world's problem that are not regional problem, that is problem of the entire world, like poverty, hunger, peace, climate change. So there are 17 Sustainable Development Goals, and if any one of you, I'm addressing the students, if any one of you, if you just go to Google Scholar and you search for any topics related to Sustainable Development Goal, you will find that lot of academicians, lot of policymakers, researchers, they are working towards
achieving the sustainable development goals. So sustainable development goals are really important because it is trying to eliminate the poverty, it is trying to eliminate hunger, it is providing good health and well-being, trying to promote gender equality. So every goal is important. And if you give some moments to think, you can relate biodiversity with each and every sustainable development goals. Suppose goal 1 that tries to end poverty. So poverty cannot be ended if when biodiversity is in threat, because biodiversity provides resources and income, particularly to the rural poor. They depend for their livelihood, they depend on the forest. If you want to end hunger, biodiversity is the key element of food security and means of improving nutrition. If we want to ensure healthy lives and promote well-being, then healthy ecosystems are the best to mitigate and spread the impact of pollution by both sequestering, eliminating certain type of water, air, and soil pollutants. If we want to promote gender equality, now we must be wondering that how gender equality can be related with biodiversity, because certain tasks like collecting water, collecting woods from the forest, these are the tasks of women, these are the tasks of girls for most of the rural areas. So if we can preserve the biodiversities and women do not need to travel a long distance to fetch water, to collect the woods, then they will have substantial time saving. That time can be used in other productive activities. The time can be used for education and job. So in this way, it promotes gender equality. To ensure the availability and sustainable management of water, definitely biodiversity helps to regulate the water reserve. And if we want to build resilient infrastructure, of course, without biodiversity, we even cannot think that, because building resilient infrastructure, promoting sustainable industrialization, it is not possible without natural solutions. Natural infrastructure, biodiversity, or the healthy ecosystem provides us reliable, cost-effective natural infrastructure. Suppose take the example of Sundarban. If we cut the mangrove forest, Sundarban will be more affected by the cyclone. So mangrove forests protect the coastal areas against flooding and cyclones. Natural infrastructure like vegetation, trees, reduces the impact of heat waves within the cities. So if we want to promote a good livelihood, then we have to promote biodiversity conservation. Climate change, without any doubt, climate change is directly related with biodiversity. Preservation of ecosystem. Conserve and sustainable use of ocean, seas, and marine resources for sustainable development, and the conservation and sustainable use of biodiversity in marine and coastal ecosystem is also the key aspect of sustainable development. Protecting, restoring, promoting sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainable management of forest, combating deforestation, and halting and reversing the land degradation is not possible without conservation of biodiversities. Sometimes because of over the natural resources, there are conflicts. Because of environmental degradation, because of contaminations, there are conflicts. So if we can preserve those ecosystems, conserve those ecosystems, then these conflicts also can be dissolved, and that will promote peace and justice to the society. So in this way, we can relate, like these are direct relation, indirectly though, biodiversity is related to all the 17 sustainable development goals. Now, Norman was the person who understood that we are losing biodiversity and we need to protect biodiversity long before. And in this view, he has identified 2 criteria to identify one region which we call biodiversity hotspot, which requires protection, which requires immediate protection.
Like the criteria says, the region must have at least 1500 vascular plant species found nowhere on the earth surface. That means they are endemic species. Endemic species means which are found only in one particular area, not in other areas. And another one is that the region must have lost at least 70% of its original recorded surface area. So those areas which are losing their original surface areas and there are plants which cannot be found anywhere, they need immediate protection, and they have been classified as biodiversity hotspot. So as of 2022, there are total 36 biodiversity hotspots that has been shown over this map present on this earth surface. Few are coastal, few are terrestrial biodiversity land. And in India also we can find there are 3 biodiversity hotspots present. So there are 2 ways basically to conserve biodiversity. One is in situ conservation, one is ex situ conservation. In situ conservation is the conservation of the species within their natural habitat. So it is less expensive. Where the species are originally occurring, we have to conserve, we can conserve them there. And ex situ is isolating some species from their natural habitat, and the advantage of ex situ is that they are completely secured and from poaching, predation, and ex situ conservation helps in monitoring the health of individual organisms. Mostly ex situ conservations are done in zoological park, botanical garden, in gene banks, in cryopreservation. These are some ways of ex situ conservation. Whereas national park, wildlife sanctuaries, biospheric reserves are the form of in situ conservation, where the species are originally occurring. So as I am from Adamas University, I would like to just let you know that we do some crazy things in Adamas University. Like we had one event called Campus Bird Count, because we have a very big campus, green campus. So there we're trying to identify how many bird species were there, and it was in collaboration with Bird Count India and the Nurture Club, which is an environmental club of Adamas University, and they have found a few unique bird species. I have given just a few photographs which I have collected from the students. So these are a few photographs. Sometimes we do this quotient analysis, like sampling, like alpha index, beta index, calculating the alpha beta index. This is our seashore areas of Tajpur, where the students were doing the calculation of alpha index on the animal species that are present. This is indoors, where we were doing the calculation of plant species, how many plant species are there. So we do such kind of thing, and it's very interesting. Every one of you can do this thing at your neighborhood. Alpha beta index are very easy to calculate. And if you are really interested in biodiversity related activities, there are ample job opportunities are there. If you just put the biodiversity consultancy jobs, you can find that India also provides some job opportunities, even provides a various kind of scholarship and job opportunities for those who are really interested in working with biodiversity conservation. Thank you. With this, I end my presentation. I hope I have not taken much time. So if you have any question, I'd like to answer. Thank you very much, Dr. Kasturi Madam. Your lecture was really commendable. The concerns you raised regarding sustainable development and biodiversity are certainly a serious question. Any question, participants? अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है, तो आपके प्रश्नों का स्वागत है कस्तूरी मैम के साथ। अगर कोई प्रश्न है किन्हीं को तो पूछ सकते हैं। नीलम मैम, आप अपना माइक ओपन करें, फिर प्रश्न पूछें। नीलम मैम। हेलो। यस मैम। मैं डॉक्टर नीलांबरी फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार यूनिवर्सिटी। हेलो मैम। निहाल सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कस्तूरी मैम से। यस मैम, यस मैम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बायोडाइवर्सिटी के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट है, जरूरी है? अगर है तो क्यों है?
बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड, वो नहीं हो सकता जब तक बायोडाइवर्सिटी का हम लोग कंजर्वेशन नहीं करेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी फॉर एवरीथिंग, फॉर सस्टेनेबिलिटी फॉर आवर फ्यूचर लाइफ, सस्टेनेबिलिटी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, वो चाहिए। क्योंकि चाहिए मतलब उसको सिक्योर करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरमेंटल सर्विसेज है, जो इकोसिस्टम सर्विसेज जो इकोसिस्टम हमें देते हैं, लाइक वाटर रेगुलेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, वो लोग देख ही नहीं पाएंगे अगर हम लोग इसको कंजर्व नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? आप पूछ सकते हैं कस्तूरी मैम से क्वेश्चन। निहाल सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम जी। मनोहर जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, प्रणाम सर, प्रणाम किए। जी जी, चलिए। प्रणाम रेखा मैडम। ओके, थैंक यू कस्तूरी मैम। आपका वाकई लेक्चर सीरीज बहुत बहुत इम्प्रेसिव रहा और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। उम्मीद है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को इससे फायदा हुआ होगा, खासकर स्टूडेंट्स को। तो अब मैं नेहा सर, एक मिनट सर। कस्तूरी मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी स्लाइड्स अगर शेयर कर दें हम लोगों के पास। बोलने वाली थी, हाँ बिल्कुल। I will share slides with Nihal sir and can share with the students. Okay मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो अब मैं इनवाइट करता हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महानाज हस्ती प्रोफेसर सरफराज आलम सर को, जो आपने 1993 में एमयू से ग्रेजुएशन किया, 1995 में आपने जेएनयू से एमए किया, 1998 में जेएनयू से आपने एमफिल की डिग्री ली और 2003 में जेएनयू से ही आपने पीएचडी की। उसके बाद 2003 से 5 में आपने लेक्चर गोपेश्वर कॉलेज हथुआ से आपने शुरुआत की अपने करियर की और 2005 से 2015 के दौरान आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे बीएचयू में। 2015 से 18 के दौरान आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद का निर्वहन आपने किया और नवंबर 2018 में आप प्रोफेसर के पद का निर्वहन कर रहे हैं। सर, आप यकीनन हमारे इस सोलर सिस्टम में किसी सुपरनोवा से कम नहीं है सर। तो सर, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप अपनी बहुमूल्य बातों को हम लोग के बीच शेयर करें। प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज आलम सर। प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज आलम सर। थैंक यू डॉक्टर निहाल। और आपने जो तारीफ की वो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मैं अदना सचीद हूँ, शिक्षक हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। So today in this lecture, at the outset, I would like to thank the organizers and more specifically the principal of the college and Dr. Nihal for inviting me, for giving me this opportunity to interact with teachers and students from my home state. Today, I'll be speaking on a topic which is very closer to my heart, and it is in the fitness of the thing that Dr. Kasturi Mukherjee, who spoke so well on the concept of biodiversity and sustainable development goals, and she spoke about how environment is intimately related. Am I audible? Yes, yes, sir. Okay. How the issue of environment is intimately related to conflict, peace, justice, and security. So in today's lecture, I will be focusing more on the interface of environment with politics. So environment is indeed a political issue, and traditionally geographers have focused in their research on how
environmental processes have shaped political events. For example, how unequal distribution of energy resources in the world has led to interstate conflicts. For example, there are ample studies which show that the availability of oil in West Asian countries and in North Africa is one of the reasons why these areas have been quite disturbed, politically quite disturbed, because the fact that all the superpowers and global powers were interested to capture or take control of these oil resources. On the other side of the spectrum is also true that it is the politics which also influence environmental processes. And one can say that how political decisions taken at international level or national level or even at local level have bearing on environmental processes. So just now, Dr. Kasturi was talking about Sustainable Development Goals. Now, these Sustainable Development Goals have been agreed upon by countries across the globe. And in a way, these are the goals which have been set for each and every country to achieve. And similarly, you have at national level many environmental laws, many development programs which do influence the environmental processes. So in this lecture, I'll be focusing broadly on interface between environment and politics, and more specifically, I'll be focusing on how environmental issues are issues of social conflict or political conflict, and by extension, there are also security issues, national security issues, human security issues. And my lecture will take examples from developing countries in general and South Asia in particular. And since I have worked on Bangladesh, so most of the examples will be from Bangladesh. Hopefully, students particularly, also teachers will be benefited from my exposition. So now let me So, can you see these slides? Yes, sir. Okay. So, my lecture is on environmental conflicts and security, perspective from developing countries. Okay. So, there are two aspects of relationship between environment and conflict. At one level, one can say that environmental changes as unintended consequences of conflict. That means there is a social conflict or interstate conflict, and environmental degradation can be one of the consequences of those conflicts. And you are quite aware that all conflicts lead to environmental degradation. And on the second aspect is that environmental change can be a direct cause of conflict. So there, generally a state or actors who are involved in the conflicts, they manipulate environments to achieve political end. So, for example, in Vietnam War in 1960s, so there was a case of defoliation of forest by the United States military, Air Force. And the idea was that the Vietnamese militia were hiding in the forest. So therefore, the US Air Force defoliated the entire forest. That led to environmental degradation.
Similarly, during the Gulf War of early 1990s, there was many cases of burning of oil wells to achieve political ends. So there are two aspects. One is there will be conflict, and environmental degradation can be an unintended cause of conflict, unintended consequence of conflict. On the other hand, conflict can, or conflicting parties can manipulate environment to achieve military end. Now, in environmental conflict and security literature, there are some terms which I would like to define before we start discussing about the issue. Now, first is environment. Now, from developing countries' perspective, the term environment, particularly in the conflict and security literature, the term environment refers to renewable resources plus human habitat. So for people in the developing country, a land or a forest or a pond is less of a aesthetic significance. It is more of a livelihood issue. It's a source of livelihood. It is a source of food. And land are also sources of habitat. Forest can also be place of habitat. So compared with the developed world, where environment is more of an aesthetic issue, in the developing country, the term environment is more of a defined more in the sense of renewable resource or human habitat. And then there are terms like environmental degradation, environmental change, environmental scarcity, and crisis. These are all very much related terms, but there are technical differences among all these terms. Talking about environmental degradation, it is a value-loaded concept. It basically refers to overall decline in the quality and quantity of environmental resources. So when there is a decline in the fertility of soil, we can call it an environmental degradation. Second is environmental change. Now, environmental change is a value-neutral concept. It can refer to all kinds of transformation in the environment. Environmental degradation is a part of change, but environmental change. But environmental change can also refer to good things, in the sense that when the quality of environment improves, this is an example of environmental change. Next is the concept of environmental scarcity, or sometimes it is also known as resource scarcity, because the term environment in developing countries refers to renewable resource. So it is an economic term which refers to shortage of resources which can be physically verified and quantitatively measured. So when the resources fall short of the demand, then there is a situation of a scarcity. And finally, you have environmental crisis. So environmental crisis is a more comprehensive concept. It refers to a situation when the capacity of an ecosystem to sustain a human life is at risk. So it may be, this environmental crisis may be human-induced, or it may be caused by a natural process. Now I'll discuss the concept of environmental crisis in more details, because I'm going to build my case of environmental conflict and security on the basis of this concept of environmental crisis. Now, as I told you, that environmental crisis emerge when it refers to a situation when the capacity of an ecosystem to sustain life is at risk. Now, at this point, I would like to say that the capacity of an ecosystem is not fixed. It is dynamic. It is a function of technology. So it keeps on increasing or decreasing. The other way of defining environmental crisis would be, it refers to a situation of breakdown of dynamic equilibrium between human beings and their environment. And this dynamic disequilibrium situation is manifested in as depletion of and pollution of freshwater supplies, degradation and loss of agricultural land, degradation, removal of forest, and depletion of fisheries. So in environmental crisis
is basically a livelihood crisis. Environmental crisis is a crisis of human habitat. So livelihood crisis emanates when there is depletion and pollution of freshwater or degradation or loss of agricultural land, degradation and removal of forest, or depletion of fisheries. Now, when these changes threatens or perceived as threatening certain human activities and well-being, like human activities like economic activities, social and cultural activities, or human well-being like physical well-being of human being like health and comfort, their psychological well-being, including aesthetic appreciation and identity. So let me summarize. When a breakdown in dynamic equilibrium between human beings and their environment threatens or perceived as threatening certain human activities or well-being, this situation is considered as an environmental crisis situation. So I would say environmental crisis is a human crisis. Every environmental crisis leads to a situation when human beings are in fix. Their economics are adversely affected, their social and cultural activities are adversely affected, and they also face physical discomfort, they face health problems, they face psychological problems, including their aesthetic appreciation and identities are adversely affected. There are 4 different causes of environmental crisis. One is environmental degradation. This is also called supply-induced crisis. That means a scarcity from reduced total availability of certain resources due to degradation or depletion. So when there is resource or environmental degradation or depletion, the total volume of resources decreases. So that leads to, that means there is less supply of less supply of resources. Second is population growth or demand-induced crisis or scarcity. That means scarcity arises because of increasing in demand caused by rapid population. When the resources are fixed, but the population is rising at a brisk pace, so there are more people to sustain. And the third is what we call a structural crisis, where there is skewed distribution of environmental resources. So here, the scarcity is caused by unequal distribution of or unequal access to resources. And finally, there is political ecology of development. Sometimes crisis is also caused by some developmental activities like expansion of the cities or construction of reservoirs or construction of factories or mining activities. And this leads to displacement of people, submergence of agricultural land, and so on and so forth. So one can understand this concept of causes of environmental crisis through these diagrams. Now, first is shrinking resource pie due to environmental degradation. Then this is supply side cause of environmental crisis. So you can see in the first page, you can see the size of resource pie is bigger. And with environmental degradation, this pie keeps on shrinking. And therefore, the total resources, the quantum of available resources actually decreases. And this leads to crisis. In the second scenario, you can see there is splitting of resource pie due to population growth. For example, in the first resource pie, you can see there are 4 actors who are dependent on total resources. And in the second pie, the number of actors has increased to 8. And in the third resource pie, the resource pie is same, but the number of people who are dependent on resources has increased. And that has resulted in declining per capita availability of resources. So this is what we call demand side crisis, a demand side resource crisis. And the third is called what we call a structural crisis. You can see that there is an increasing gap in share of resource pie due to environmental degradation. Now, in the first pie, you can see that all the 8 actors have equal share of resources.
Now, in the second pie, because of some changes in the policy of the state or some events in the environment, what happens that actor number 1 and actor number 5, the share of their resources has increased at the cost of other actors like actor 2, 3, 4, 5, 7, 8. And again, in the third pie, you can see the actor number 1 and actor number 5 have disproportionate share of resources. And as a result, there is a situation of crisis for actor number 2, 3, 7, 8, 6, 7, 8. So actor number 1 and 5 have captured resources at the cost of greater crisis and misery for actors like 2, 3, 4, 6, 7, 8. So this is what we call a structural crisis because of inequality in the society. Now, these 5 or at least these 3 causes of resource environmental crisis, they keep on interacting. They do not operate in isolation. And as a result, there are 2 forms of linkages. One is what we call resource capture, and the second is called ecological marginalization. So what happens when there is a sharp decline in the quality and quantity of environmental resources in combination with rapid population growth? So this encourages powerful group within the society to shift resource distribution in their favor at the cost of greater misery for the poor and weaker groups whose claim to resources are opposed by this powerful elite. So when there is inequality, already existing inequality in the society, and environmental degradation is happening, the worst affected people are the poor people. And because of the environmental crisis, the rich people, the elite people are less adversely affected. In fact, they get benefited because they have more sustaining power. So they can actually shift the distribution of resource in their favor at the cost of the weaker segment of the population. This is what we call resource capture. I will explain it with the help of diagram. And second is called second process is of interaction among various causes of environmental crisis called ecological marginalization. So ecological marginalization happens when an already existing unequal resource distribution in combination with rapid population growth impels the displacement of people to ecologically fragile regions to cause severe environmental damage and chronic poverty. So what happens when there is inequality in terms of access to over resources, and if there is environmental crisis or if there is a rapid population growth, it is the weaker section who are forced to leave their localities and migrate to some other areas. This is what is happening in Bihar, has been happening in Bihar and Eastern Pradesh, Uttar Pradesh for the last many years. It is generally the weaker section of the people who do not have land. It is this section migrating to other states. These linkages can be explained diagrammatically. You can see the first situation of resource capture. So there is rapid population growth, and in combination with sharp decline in the quality of this leads to environmental crisis. And the second, unequal access to resources in combination with population growth causes environmental crisis. Now, this can be further explained in more geographical sense that environmental induced migration and socio-spatial and ecological marginalization. So you can see that how unequal distribution or access over resources in combination with rapid population growth leads to both ecological marginalization, that is displacement of people to ecologically more fragile region, and socio-spatial marginalization, that is migration of people to economically unproductive areas. Now, once the environmental crisis has started,
or set in. So how will human react to it? So there are three critical points along the spectrum. You can see one is what we call awareness threshold, below which people are simply not aware that environmental stress affects what they do or how they do it. Second threshold is action threshold. When the level of environmental crisis increases, then people consciously do something to cope with or minimize the impact of environmental stress. And at third level, when the environmental crisis reach intolerance threshold, that when the situation becomes very critical, then people are forced to change what they do or where they live. Either they abandon their occupation, or they leave their place, or they start fighting against the perceived enemy. Now, when the socioeconomic and other stress caused by environmental stress pass the intolerance threshold, that is the third stage, the affected people react in one of the two possible ways. First, they may remain on the land or in their area, but they will change what they do. That means they will change the occupation. They will shift their occupation and change over to some other occupation. So a farmer may become a pastoralist, or pastoralist may become a fisherman. And otherwise, they may move somewhere else to earn their livelihood because they cannot survive in that area, and for that they have to move to some other areas. So this is how human being reacts to a range of environmental crises. Okay, this is a diagrammatic presentation. This is a diagram presented by, this diagram was actually made by Chris Park. So you can see in the initial stage, when the environmental, the degree of environmental crisis is less, people absorb losses. And the second stage, they accept and share losses because of environmental stress. However, if the environmental stress increases, then they have to search for effective adjustment. And if that is not sufficient, then they will have to change their occupation or place of habitat. So on the first half of this diagram, you can see that if there is absorptive capacity. So when people cannot absorb the stress created by environmental change, then they have to look for adjustment. For them, adjustment becomes a necessity. So they will either adjust and make some effective adjustment by becoming involved in some other activities, or if that is not working, then they will change their location or they will change their occupation. So, yeah. So let me define environmental conflict. An environmental conflict is a conflict caused by environmental crisis or environmental scarcity of resources. That means caused by a human-induced or human-made disturbance of normal regeneration rate. Now, environmental crisis or environmental scarcity can result from overuse of a renewable resource or from the overstrain of ecosystem sink capacity, that is pollution. Both can reach the stage of destruction of a space of living. When I say space of living, it not only means the habitat, it also means the resources on which people depend. So when both these are destructed or disturbed or destroyed, then people have to actually react on urgent basis. Now, one of the reactions of environmental degradation are in the form of what we call various kinds of social and political conflicts. So there are three types of environmental conflicts, and these are based on empirical study of by scholars, and I have also done a study in Bangladesh.
So these conflicts are can be seen across the world in many developing countries of the world, and even in India also. You can see many cases of environmental conflict. First is simple scarcity conflict. Now, simple scarcity conflict happens when the decreasing supply of physically controllable environmental resources, such as clean water or good agricultural land, would provoke in simple scarcity conflict or resource war. Simple scarcity conflicts are direct, immediate, and a specific conflict, particularly over a scarce renewable resource, such as river water, fisheries, and agriculture productive land. Now, for example, the conflict between India and Bangladesh, or tension between India and Bangladesh over the share of river water, or conflict between India and China and India and Bangladesh over share of river water, is a case of a simple scarcity conflict, because of growing economies in the countries of this region, because of growth of population, the requirement of water has increased. However, supply has not proportionately increased. In fact, it has decreased because of pollution and also to an extent due to climate change. So we are all aware that there was a conflict between, not military conflict. Conflict doesn't have to be a military conflict, but it has to be disputes and tension and stress between the countries. Between India and Bangladesh during 1990s over Ganga, and the agreement was signed between the two countries in 96. And in rural areas also, you can see that there is conflict between farmers. There are canal irrigation, and those who are on the upside of the canal, and the farmers who are on the downside of the canal. And so there is a conflict over who will access to water, because generally the people who are on the upside, they block the flow of water, and unless and until they get their land fully irrigated, they do not allow the canal irrigation to go down, water to go down. Second is group identity conflict. Group identity conflict actually happens when large-scale population movement caused by environmental stress, and this is generally manifested in ethnic clashes. Group identity conflicts occur due to protect and reinforce the identity of a particular group against others. Such conflicts are likely to arise from large-scale movement of environmental refugees, or you can say people in distress. So you can see ethnic conflicts in Assam because of movement of Bengalis from Bangladesh as well from Bengal these are very overpopulated region, to Assam, which was underpopulated region since the second half of the 19th century. Led to a series of conflicts in Assam, and that is still continuing in some form or other. And the third is relative deprivation conflict. Now, relative deprivation conflict occur in those areas of developing societies which produce less wealth because of environmental problems. Their citizens become increasingly discontent by the widening gap between their actual level of economic achievement and the level they feel they deserve. For example, many people say that militancy in Punjab, in the first phase of Green Revolution, starting from mid-60s up to 70s, there was a rapid increase in income of the farmers in Punjab. However, there was the law of diminishing return set in early 80s, and the agricultural production started plateauing. So despite increasing input, the production was not increasing. And as a result, the input cost increased, the output remained fixed. And this resulted in decline in the income. And as a result, many youth in Punjab became very discontent
And there are studies which say that this is a classic case of relative deprivation, and which is basically caused by decline in agriculture production. So this is a model which I have developed. You can see that at one level you have environmental degradation in population growth and unequal distribution and access over environmental resources, in combination with political ecology of development, lead to environmental crisis. And these environmental crises are manifested in many social crises, like disordering in the distribution of resources, loss of sources of living, decline in standard of living, deterioration of human health, and erosion of cultural identities and way of life. Leads to that is pauperization, and change in the place of living, that is displacement. And these leads to conflict, various kinds of environmental conflict, like resource scarcity conflict, relative deprivation conflict, and group identity conflict. Now we can take some empirical cases where these conflicts have occurred. So now we will first divide these conflicts into internal conflicts and external conflicts. So internal conflicts occur within the state. So for example, or group versus a state conflict. These are examples of the internal conflict. On the other hand, a state versus state conflict is an example of external conflict. So many of you must have read somewhere that in Bengal, there is a land called Chor. You know, Chor was basically river accredited land. And after every rainy season, when the river level comes down in the big rivers of Bangladesh, and there are cases of rise in the dry land, and some river islands are created, and there are parties and groups surrounding nearby that river, and they start fighting over the control of these river islands. And these things also happen even in Bihar and eastern UP, because this not on river island but on the dry bed of river Ganga, which is actually very productive. So powerful groups fight each other to take possession and control of these river beds. So this is a case of conflict, group versus group conflict. And there's group versus state conflict, about which I will discuss a little detail. In the case of Chittagong Hill Tract, where there was a conflict between the Chakma tribes against the Bangladesh government, the state of Bangladesh. And this conflict continued for more than 25 years. And it led to loss of many lives, both military as well as common people. And there are, I'll discuss about this in coming slides. And then there are external conflicts, that is conflict between a state, So I have already given examples of conflict over sharing of interstate rivers. So most large rivers of the world are interstate or multinational rivers. They cross many states. And the sharing states usually have disputes over the share of water of these rivers. So I'll discuss about this also. And then also there are cases of illegal migration and conflict. So India, Bangladesh, this conflict is continuing for many decades, not decades, in fact, for century, for over 1 century. So let us see group versus group conflict. I have already discussed conflict over Char. This is river accredited land. So whenever an island is created in the bed of the river, in the middle of the river, so what happened, there's a competition among local dominant groups to occupy these lands. And these lands are, the ownership of these lands are not clearly defined.
And therefore, the local dominant groups or families, they keep on fighting among themselves to take control of these lands. And then you have group versus a state conflict. And the classical example is CHT conflict, that Chittagong Hill Tract, which is on the southeastern part of Bangladesh. There are 3 districts, Bandarban, Khagrachari, and Rangamati. This is also called fry pan, handle of the fry pan. Bangladesh का नक्शा देखिएगा, जो fry pan होता है, उसका जो handle होता है, उसका southeastern part में 3 district हैं, Bandarban, Khagrachari, and Rangamati. Now, ये 3 district जो है 1951 में जो ट्राइबल पॉपुलेशन था, और खासकर नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन, देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज in the ethnic composition of non-tribal population. These 3 districts are tribal dominated districts. And so much so that in 1951, the share of non-tribal to total population was merely 9.1%. However, in 1991, the share of non-tribal population increased to 45%. So, who are these non-tribal people? Now, most of these people are Bengali settlers. They were actually displaced by successive cyclones, because Bangladesh is one of the most cyclone affected countries of the world. So those people who were living in the coastal areas, they were displaced by cyclone, and they were settled in this part of the country. And as a result, there was a shift in demography. So when demography shift, then the relation between groups also it undergoes changes. Now again, in 1962, when Bangladesh was East Pakistan, there is a river, a small river, which is known as Karnafuli River, but this is the interstate river. It starts from India and goes to enter into Bangladesh. A dam was constructed, which is known as Kaptai Dam. And because of this dam, 665 square kilometer area, including 220 square kilometer of cultivable land, was submerged. And this led to displacement of about 1 lakh people. And most of them were Chakmas. I mean, 75% of them were Chakmas. And this area was subsequently settled by Bengalis who were displaced because of floods and cyclones. And because of this, there was a discomfort among the ethnic tribal communities. And this led to the formation of what was called a Shanti Wahini. And the Shanti Wahini was actually a militant group, and it ambushed about 90 soldiers of Bangladesh just after independence, when there was euphoria in Bangladesh that we have got independence from Pakistan. And in the meantime, this Shanti Sena ambushed about, and some 90 soldiers were killed. And this conflict continued till 1997, when a peace agreement was signed. And because of this, you can see that the demographic composition of the non-tribal and the tribal has remained stable since. There is no more resettlement in Chittagong Hill Tract. So now tribal, even now, if you see in 2011 census, 221 census, like India, there is also no census in 2000. There was no census in 2021. So tribal people constituted 54.5%, and most of them were Buddhist. Some Hindus, 6.5%, and Christian 3%, animist 1%, and Muslim 0.5%. And non-tribal or Bengalis who constituted 45.5%, and out of 45.5%, 42% were Muslims and 3.5% were
Hindus. And now this share of non-tribal population, which was roughly 45% in 71 and 81 and 91, this share is now there is no much change in the share. And some privileges were given to the tribal communities of Chittagong Hill Tract, and that led to successful solution or resolution of this conflict in the Chittagong Hill Tract. So you can see this is the CHT tract, southeastern part of Bangladesh. Now this is a very strategic location. You know, you have Myanmar and India, Indian state of Tripura, and then you have Bangladesh. So because of this strategic location, also this area was quite disturbed. Now the third is you have a state versus state conflict. You know, now when the state formation in South Asia happened in 1947. So the ecology and economy were discarded. I mean, it was mainly based on religious demography of the regions. So Muslim-dominated areas were created, and Pakistan, West Pakistan and East Pakistan emerged as a distinct unit. However, it was not always the case. Now, in case of like Murshidabad and Khulna, you know, hydrology and hydropolitics overpowered religion. Religion was not always the case in the delimitation of boundaries. You know, like Khulna was a Hindu-dominated district, even in 1947, and Murshidabad was a Muslim-dominated district, which is in West Bengal now. In 1947. Now what happened, you know, as the river Hooghly, which is a tributary of the river Ganga, it leaves the river Ganga in Murshidabad district. And as you know, the city of Calcutta is on the Hooghly river. Now had Murshidabad gone to Bangladesh, then the entire economy of Calcutta would have been under the control of Bangladesh, isn't it? So for this hydropolitical reason, geopolitical reason, so Murshidabad was kept with India and Khulna was given to Bangladesh. So what happened that mostly an adequate degree of complementarity of interest has not yet been achieved in South Asian nations. And there are persistence of interstate problems. And there is a tendency among countries of the region to look inward. They look among themselves. And there is clear-cut absence of regional level thinking and inability to work towards regional solutions. Now, there is also a case of big state and a small state syndrome, you know. Now, India has boundary with almost all the states of South Asia. And none of these, and none has boundary with each other. You know, Bangladesh doesn't have boundary with Nepal, or Nepal doesn't have boundary with Pakistan, but they all have boundary with India, except, so India, you know, is both a down riparian state with reference to Nepal and Bhutan. That means the rivers were originating from Bhutan or China, they cross Nepal and Bhutan, then they enter to India. So with reference to Nepal and Bhutan, India is a down riparian state. However, with reference to Pakistan and Bangladesh, it is a upper riparian state. You know, so rivers flowing through India after flowing through India, they enter Bangladesh and Pakistan, like Indus, Jhelum, and all those in Pakistan. Now, in case, you know, of India and Bangladesh, you know, there are 54 rivers, and all these 54 rivers flow from India to Bangladesh. So
virtually Bangladesh is at the mercy of India, because the entire economy of Bangladesh, which is made in agrarian economy and agro-based industrial economy, is dependent on assured supply of river water. So there is always a tension between India and Bangladesh over unilateral withdrawal or diversion of waters. Bangladesh alleges that India unilaterally withdraw and divert waters, and it just disregard its concern. And then there is upstream pollution of transboundary rivers in India from agriculture runoff, industrial pollution, settlements, and municipal waste. And as you know, when water follow, pollution also flows. And thirdly, there is a unilateral river valley development structures in India. This is what Bangladesh has to say, which produce adverse effect on Bangladesh. Bangladesh alleges that because of these reasons, there is an ecological degradation in Bangladesh. Many rivers have dried. And, you know, there's problem of water, soil, and forest and salinity intrusion, particularly in the coastal areas. There is studies which indicate that there is decline in agriculture, fishery, and agro-based industries. And also, you know, river transportation is very important in Bangladesh, even now. River transportation, because of decline in the flow of water, the river transportation has also been adversely affected. And also, Bangladesh alleges that when there is flood in Bangladesh, that Bangladesh says that India has left water. Or when there is drought in Bangladesh, then Bangladesh says that India has not left water. Like what happens in Bihar. So whenever there is flood in Bihar, we say that it is because Nepal ने पानी छोड़ा है. तो इस तरह का misperception की वजह से जो काफी सारे disputes हैं. And there is a growing narratives in Bangladesh, in public of Bangladesh. You can see that India tend to regard transnational river, especially Ganga, as essentially an Indian river. And then little room for serious consideration of the needs of Bangladesh. Then Bangladesh also, people in Bangladesh feel that there is inadequate appreciation of the ill effects suffered in Bangladesh because of reduced flow. There is also this misperception in Bangladesh that India can cause flooding in Bangladesh through the release of water stored behind the Farakha barrage. India can cause droughts in Bangladesh by stopping water of transnational rivers. A large and more powerful India disregarding the legitimate interest of a smaller and weaker neighbor and callously inflicting grievous injury on it. So these are the kind of perception which has developed, and the main reason for the development of these perceptions is the political elite of Bangladesh. They always keep on backing India, particularly Jamaat-e-Islami and other right-wing political formation. And now there is a counter narrative from India, you know. So there is a tendency, in India there is this perception that there's a tendency in Bangladesh to regard the undiminished continuance of historical flow as their birthright. Bangladesh fails to recognize the water needs of upstream pollution, that is India. Bangladesh refuses to even consider the other possibilities of meeting the water needs of its own people, like interlinking of rivers or transfer of water from one river basin to another river basin. There is a resentment and distrust of India as a big and powerful country among the elite of Bangladesh. Bangladesh exaggerates the adverse effect of reduced flow. I mean, India is also suffering from reduced flow. Many rivers seasonal rivers have gone dry in India also. And it is because of overall change in the economy and expansion of settlement and climate change. Now, Bangladesh has blown the dispute into a big issue in its domestic politics, making the inter-governmental negotiation difficult. What has happened that in developing country, you know,
when there is a dispute between two countries, the politicians in both the countries try to rack it up for their own political advantages. And once a perception developed that Bangladesh is enemy, India is enemy in both the countries, then the negotiations become very difficult. So that one has to be very, very sensitive. So with these words, I would like to conclude that there are 54 rivers, and all of them flow from India to Bangladesh. And till now there is agreement only on one river, that is River Ganga, and it was only for 20 years, and it is coming to end in 2026. There is no agreement in 53 other rivers. So, and the water requirements, water demand is increasing in India as well as in Bangladesh. And therefore, it calls for a regional level thinking, or it calls for more collaborative development of water resources between India and Bangladesh, including Nepal and Bhutan. Unless and until there is a regional level thinking, what happens sometimes just across the boundaries in Bangladesh starts constructing a barrage, a dam, and that leads to submergence of areas in India. In local level, there are many cases of local level conflicts in the border areas of India and Bangladesh in the northeastern parts of India. So not only these are 54 rivers. Now, as you know, it is the behavior of the rivers that in the downstreams, they keep on splitting. So there are 200 rivers in Bangladesh, and 54 enters into India, from India to Bangladesh, and once they enter into Bangladesh, they split into various branches. So the entire economy of Bangladesh is influenced by the water supply through these rivers, like fisheries and agriculture, transportation, and so on and so forth. So these are some of the issues. Then you can see on Brahmaputra also there is there are developments in China, that China is developing structures on Brahmaputra River to divert water to its western part, where there is a scarcity of water. And there is apprehension and concern in India as well as in Bangladesh, that what will happen if the flow of water reduces in Brahmaputra. So such kind of conflicts are everywhere. In West Asia, for example, there is a conflict between Syria and then Turkey, and then in countries like Ethiopia and Sudan, you have conflicts on River Nile. So in most of the developing countries, you can see there are conflicts over shared resources. So speaking from developing countries' point of view, the water, land, forest, fisheries, these are elements of environment, but more than that, they are actually resources. It is on these resources that the livelihood and habitat of the people are dependent. So any decline in the quality of or quantity of these resources lead to adverse impact on human beings, and it over a period of time results in various kinds of conflicts. So thank you very much. If there are queries, questions, I would be very happy to interact with you. Thank you very much. Thank you so much, Sarfaraz Alam sir. It's a very nice presentation, very systematic presentation. Now the session is over for question answer. अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप सर से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हो या हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं.
Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, myself Deepti Senwal. I am a research scholar from the Chandigarh Wal University. सर मेरा एक ऑब्जेक्टिव है सर इसमें रिसर्च में टू एनालिसिस द पीपुल्स पार्टिसिपेशन एंड परसेप्शन ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी एनिमल एंड प्लांट्स। सर मैं ये जानना चाहती थी सर कि हाउ टू मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजनल लेवल सर। Now, generally, if you want to measure the impact of changes in biodiversity, then first of all, you'll have to understand to what extent people are dependent on it for their everyday need, fine, including their health and other comfort. So people depend on biodiversity for meeting their food requirement, for medicinal needs, for fodder, and for many other things. So first you have to see that किस तरह से लोग उस पे किस चीज के लिए डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट पे, और जो डिपेंडेंस है जी सर वो क्या रहा है या बढ़ रहा है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉर एग्जांपल लोगों को क्या पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा है, या जलावन की लकड़ी लेने के लिए और भी समय ज्यादा लग रहा है। जैसे कस्तूरी मैडम ने बताया कि जैसे जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो जैसे जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है, तो क्या है जनरली ट्राइबल एरिया में और इवन गांव में क्या होता है कि औरतें पानी फेच करती हैं, बच्चे पानी फेच करते हैं, बच्चे या औरतें जलावन की लकड़ी लेने जाती हैं। तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होगा, बच्चे औरतों को और दूर जाना पड़ेगा। यस सर, यस सर, यस सर। या पानी लेने के लिए जलावन की लकड़ी लेने के लिए समय भी ज्यादा लगेगा। तो ये तो एडवांस इफेक्ट हुआ। उसी तरह से फार्मर जो है कि क्या कि अगर रेनफॉल रेजिम में क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है, क्या तो क्या इम्पैक्ट बढ़ा है क्या एग्रीकल्चर में, फाइन। तो इस तरह के आपको पैरामीटर बनाना पड़ेगा, उसी के आधार पे आप उनका परसेप्शन मेजर कर सकती हैं कि हाउ ओवर टाइम देयर डिपेंडेंस द पैटर्न ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड और नॉट। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और कोई? आई थिंक सर अब कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, बट चैट बॉक्स में जो आपके प्रेजेंटेशन के लिए एक तरह से तारीफ पे तारीफ लिखी जा रही है, और सर हम फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी ये आपका जो पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। जिस हिसाब से आपने कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया सर, थैंक यू सो मच सर। और सर फिर से हम लोग टच में रहेंगे और फिर से आपसे दूसरे टॉपिक्स पे भी आपसे बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। जरूर आई एम वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम। थैंक यू सरफराज आलम सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वर जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स से एक चीज शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही दुखद घड़ी है, बिकॉज आज जो हमारे प्रोफेसर आर.बी. सिंह सर के घर जो है एक कैजुअलिटी हो गई है, उनके यहाँ एक लोगों की डेथ हो गई है, जिस वजह से वो आज हमारे यहाँ वेबिनार में नहीं जुड़ पाए हैं। बट उन्होंने पेपर अपना प्रेजेंट करने के लिए बहुत तैयार रखा था, तो उन्होंने अपने शिष्य के माध्यम से उसको प्रेजेंट करने की रिक्वेस्ट की है। तो सो आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर निहाल अहमद सर कि काइंडली सर का जो पेपर है उसे आप पढ़ दें, बिकॉज सर ने प्रिपेयर किया था उसके लिए। द टॉपिक ऑफ पेपर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन द सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी। ओवर टू निहाल सर। थैंक यू मलेखा मैडम। और सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर के एज ए प्रतिनिधि के रूप में मैं उनके पेपर को मैं पढ़ रहा हूँ। मैं सर का शिष्य रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी में, और मुझे ये काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है कि सर के पेपर्स को मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा।
इसके लिए सर के प्रति आभार। इस व्याख्यानमाला के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर को धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मुख्य वक्ता के रूप में निमंत्रण दिया। वर्तमान दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है और बुद्धिजीवों से लेकर आम लोगों तक ऐसे विषयों पर विचार विमर्श के लिए इस तरह के विषय वस्तु का चयन किया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और इस व्याख्यान माला में मेरा जो विषय है जिसको मैंने चयन करके भेजा है, सतत विकास हेतु पर्यावरणीय संतुलन की अनिवार्यता। सतत विकास भारतीय समाज की विरासत रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया तथा जियो और जीने दो, लाइव एंड लेट देम लाइव जैसे दर्शन और कर्म सतत विकास की ही मौलिक अवधारणाओं पर आधारित है। महात्मा गांधी ने उचित ही कहा है कि पृथ्वी पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन वे हमारे लोभ के लिए पर्याप्त नहीं है। देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर योर नीड्स बट नॉट इनफ टू मीट और ग्रीड। उद्भव और विकास प्रकृति का नैसर्गिक अनुशासन, नियम एवं अनिवार्यता है। इसी आधार पर डार्विन द्वारा जीवों के अनुशासन, नियम और अनिवार्यता के संबंध में एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज का सिद्धांत भी दिया गया है। विकास की ये सभी प्रारंभिक अवधारणाएं स्वतः पर्यावरणीय संतुलन के नियमों पर आधारित है। आपके आसपास की वे सभी चीजें जिसे आप देख सकते हैं, समझते हैं और उपयोग में लाते हैं, वे स्थानीय पर्यावरण का निर्माण करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी स्वयं एक बृहद पर्यावरणीय तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। इस तंत्र के साथ मानव द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार ही पर्यावरणीय संतुलन को विनष्ट कर रहा है। पर्यावरणीय संतुलन के लगातार विनिष्ट होने से बचाव हेतु सतत विकास के कार्यों को अग्रसारित करने की जरूरत है। पर्यावरणीय संतुलन के घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण का निर्माण अजैविक एवं जैविक घटकों के अवस्थिति और उनके बीच अंतःक्रिया, अंतरक्रिया और अंतिकरण, इंट्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन की सतत प्रक्रिया का परिणाम है। अजैविक घटकों का निर्माण भूमि, जल और वायु, लैंड, वाटर एंड एयर तथा जैविक घटक का निर्माण जीवमंडल, बायोस्फीयर करता है। दूरस्थ घटकों में ब्रह्मांडीय पिंडों, मुख्यतः सूर्य और चांद भी पर्यावरणीय निर्माण में ऊर्जा और उल्का पिंडों के द्वारा अपना योगदान देते हैं। घटकों की कारिक भूमिका को सरल करते हुए कहा जा सकता है कि प्रकृति के अजैविक घटक पदार्थ और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके साथ जैविक घटक सतत अंतरक्रिया के द्वारा एक संतुलित पर्यावरण का निर्माण करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी तंत्र एक बृहद पर्यावरण है, लेकिन स्थलीय विशेषता, जलवायु, नदी, झील, सागर, वन, मरुस्थल, हिमानी, हिमाच्छादन जैसे कारक बृहद से लघु स्तरीय पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के घटक कई महत्वपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इनमें खाद्य श्रृंखला, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र तथा कार्बन चक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खाद्य चक्र की जटिलता और विविधता जीवमंडल के उद्भव और उसके अस्तित्व में बने रहने का प्रमुख कारण है। उपरोक्त सभी घटक प्राकृतिक नियमों के अनुरूप अपना अस्तित्व बनाकर कारिक भूमिका में सक्रिय रहते हैं। यही सक्रियता पर्यावरणीय संतुलन को कायम रखता। पर्यावरणीय संतुलन का ह्रास। पर्यावरणीय संतुलन के अंतर्गत सभी घटकों की अवस्थिति, कार्य और उत्पादकता स्वतः निर्धारित तथा प्राकृतिक नियंत्रण अनादिकाल से होते आ रहे हैं। पर्यावरण में भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और उस परिवर्तन का अनुभव लंबे अरसे बाद होता है। मनुष्य द्वारा प्रकृति की इसी निर्धारित प्रक्रिया में दखल देने से पर्यावरणीय ह्रास या निम्नीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। वर्तमान समय में निम्नीकरण का स्तर इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है कि मानव जाति के अस्तित्व पर भी संकट की छाया अनुभव की जाने लगी है।
पर्यावरणीय संतुलन के ह्रास के प्रमुख कारणों की समीक्षा से स्पष्ट है कि मनुष्य ही इसके केंद्र में है। यही स्थिति अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है, अथवा उस मूर्ख की भांति है जो उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा है। मानव शास्त्री बोल्सवाय के अनुसार जिस काल में मनुष्य चौपायों से दुपाया जानवर बना, उसी समय से उसके अतिरिक्त अंग ऑर्गन के रूप में 2 हाथ प्राप्त हो गए और इसका उपयोग अतिरिक्त लाभ प्रकृति के दोहन के रूप में प्रारंभ हो गया। उन्होंने यह भी लिखा है कि मेधावी मानव होमोसेपियंस को तुलनात्मक दृष्टि से अतिरिक्त मस्तिष्क आकार एडिशनल ब्रेन वॉल्यूम प्राप्त हुआ, जिसके कारण अन्य जीवों की तुलना में वह अधिक चतुर बना तथा अच्छे बुरे की पहचान करने लगा। उसके द्वारा आग पर नियंत्रण पा लिया गया। वह झुंडों में रहने लगा तथा अर्थपूर्ण आवाज मीनिंगफुल साउंड निकालने लगा। इसी के साथ मानवीय समाज और संस्कृति का उद्भव प्रारंभ हो गया और पर्यावरण का मानवीय प्रहार तेज होने लगा। मानवीय जनसंख्या की दृष्टि से भी पर्यावरण ह्रास का एक बड़ा कारण है। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या मात्र 50 करोड़ थी। 1950 ईस्वी में बढ़कर 250 करोड़, 1987 में 500 करोड़ तथा 2011 में 700 करोड़ हो गई है और यह वर्तमान में 800 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने वाली है। इस वृद्धि का मूल कारण मृत्यु दर पर भारी नियंत्रण, जन्म दर पर सीमित नियंत्रण, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि तथा अकाल आपदा से होने वाली मृत्यु में भारी कमी आना है। शेष जीवों की जनसंख्या वृद्धि प्रकृति नियंत्रित करती है, लेकिन मानवीय जनसंख्या वृद्धि मानवीय प्रबंध पर निर्भर करता है। यही अंतर मानव की बढ़त स्थापित करता है और वह अपने नैसर्गिक अधिकार से कई गुना अधिक प्राकृतिक अर्थात पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन कर उसे खोखला बनाते जा रहा है। वनों की भारी कटाई, महानगरों का विस्तार, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से भारी वृद्धि हुई है। ओजोन स्तर का पतन, भूमंडलीय ताप, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, पृथ्वी तल पर अपक्षय न होने वाले कचरों का ढेर, मॉन्स ऑफ नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट्स, जीवाश्म ऊर्जा का भारी प्रयोग, जलवायु, ध्वनि तथा मृदा प्रदूषण, वनीय आग, हिमानियों का पिघलना, प्राकृतिक आपदाओं में अप्रत्याशित वृद्धि जैसे अनेक कारक हैं जो पर्यावरण के वर्तमान ह्रास की स्थिति के कारण है। इतना स्पष्ट है कि इन सभी कारणों में मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं कारणों का कॉजेज और कॉजेज है। पर्यावरणीय ह्रास का परिणाम धीरे धीरे भयावह बनता जा रहा है। पर्यावरण में इसका प्रभाव विश्व तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति, ओजोन स्तर में ह्रास, मुख्यतः महानगरों में प्रदूषण के रूप में अनुभव किया गया, लेकिन 1970 ईस्वी के बाद इसके व्यापक प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2016 में नगरीय प्रदूषण की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें विश्व के प्रथम 10 सर्वाधिक प्रदूषित नगर भारतीय नगर हैं। ये क्रमानुसार कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर तथा श्रीनगर है। प्रदूषण का प्रभाव लघु प्रदेश से लेकर भूमंडलीय स्तर तक अनुभव किया जाने लगा है। 1970 से 50 वर्षों के बाद अर्थात 2020 ह्रास के कारण मानवीय सभ्यता और संस्कृति पर ही संकट हो गया है। यदि कार्बन उत्सर्जन की यही प्रवृत्ति कायम रही तो 2100 ईस्वी आते आते विश्व के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे समुद्री जल स्तर में 1 से 3 मीटर तक की वृद्धि हो सकती है। यह इतना भयावह होगा कि लगभग 2500 द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। मालदीव, मार्शल द्वीप तथा नौरू द्वीप समूह जैसे देशों का नामो निशान अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बांग्लादेश की लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक की जनसंख्या तटीय भागों को छोड़कर ऊपरी प्रदेश में जाने के लिए विवश हो जाएंगी। अफ्रीका महादेश पर कोई भी शिखर हिमाच्छादित नहीं होगा। हिमालय की हिम रेखा लगभग 90 से 100 मीटर ऊपर चली जाएगी। आर्कटिक सागर के पिघलने से एक नया समुद्री मार्ग उत्पन्न हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप के कई द्वीप मानवीय अधिवास के लिए खुल जाएंगे। मरुस्थलों का विस्तारीकरण होगा तथा अनेक नई संक्रमण आने वाली बीमारियां भी उत्पन्न होगी। समुद्री जल स्तर में
उष्ण समुद्र के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कोरल पॉलिप समाप्त हो जाएंगे। प्लैंकटन जैसे सूक्ष्म वनस्पति का भी विनाश होगा। पेंगुइन और समुद्री गिलहरी जैसे समुद्री जीव तेजी से विनष्ट होने लगेंगे। पुनः समुद्री जल के गर्म होने से चक्रवातीय बवंडर की बारंबारता और आकार औसत प्रतिवर्ष 10 से 12,000 वर्ग किलोमीटर वनों की कटाई हो रही है। सिर्फ ब्राजील में ही आधे से अधिक वनों की कटाई हो रही है। वर्तमान में विश्व में 16% क्षेत्र फल वनों से आच्छादित है, जबकि इसे 33% होना चाहिए। हैती जैसे देश वन विहीन है, ट्री लेस कंट्री है। वनों की कमी से निम्नलिखित पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है। वनस्पति की विविधता में ह्रास हुई है। कई वनस्पति विरल हो चुके हैं, जैसे यूएसए में प्रेरी प्रदेश के मैदान लगभग समाप्त हो चुके हैं। जैविक विविधता में भारी ह्रास है। हाथी जैसे विशालकाय और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी संकटग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। एक अध्ययन के अनुसार औसत प्रतिदिन वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलकर 50 से 60 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। यह विलुप्त होने के कगार पर हैं। वनों की कमी से वर्षा में कमी और तापमान में वृद्धि की समस्याएं उत्पन्न हुई है। बंजर भूमि के आकार में लगातार वृद्धि हो रही है। वन आधारित उत्पादन में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पाद की निर्भरता में वृद्धि और प्लास्टिक जैसे विनष्ट न होने वाले तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव करने वाले पदार्थों के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि की प्रवृत्ति विकसित हुई है। वनों के ह्रास से जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र और कार्बन चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। वर्षा की अनिश्चितता, कार्बन की मात्रा में वृद्धि, ऑक्सीजन की मात्रा में तुलनात्मक कमी और सूक्ष्म जीवों से लेकर वृहद जीवों तक उपलब्ध होने वाले प्राथमिक उत्पादकता में कमी इसका प्रमाण है। अतः स्पष्ट है कि तापमान में वृद्धि, समुद्री जलस्तर में वृद्धि और वनों का ह्रास, ये तीनों पर्यावरणीय ह्रास के कारण एवं परिणाम दोनों हैं। इन्हें पर्यावरणीय संतुलन की अनिवार्यता के अनुरूप नियंत्रित नहीं किया गया तो विकास के चौराहे पर खड़ा मानव भटकाव के अंधेरे में खो जाएगा और पृथ्वी तंत्र का जैविक अस्तित्व और विविधता भविष्य के गर्त में समा जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच निहाल सर, और राज बिहारी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनके सरल और सहज व्यक्तित्व का ही को ही प्रदर्शित करता है कि वो आज किसी इतनी बड़ी कैजुअलिटी से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन निहाल सर के माध्यम से उपलब्ध कराया हम सबके बीच। हम सब प्रतिभागी उनके इस लेक्चर से बहुत कुछ सीख पाए हैं, हमेशा से सीखते रहे हैं। थैंक यू सो मच राज बिहारी सर। निहाल सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब पार्टिसिपेंट की तरफ से उनको जरूर धन्यवाद बोले और अगले कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को आप ही स्वीकृत कराएं। थैंक यू निहाल सर। अब मैं इस कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्क्रीन पे आए और प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए आगे बढ़े। रविंद्र सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले तो आज के इस आयोजन के लिए मैं अपने छोटे भाई मिस्टर निहाल अहमद साहब को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इनके प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पर हमारी ये चर्चा हो पाई। मैं कुछ कहने से पूर्व धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भाई प्रोफेसर सरफराज साहब को, जो बीएचयू से आज हमारे साथ जुड़े हैं, और पूरा लेक्चर मैंने उनका सुना। किस तरह से आपने जैव विविधता को मानव जीवन और संपूर्ण पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए अपनी बातें कही है। मैं समझता हूं कि आपके वक्तव्य से आज का यह हमारा आयोजन काफी सफल हुआ है। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हमारी बहन
जिसने काफी विस्तार से अपनी बातें रखी और हमारे साथ इस वेब संगोष्ठी में जुड़ने वाले हमारे बड़े भाई प्रोफेसर शिव मुनि यादव जी, रामेश्वर भाई जी और अन्य अनेक भूगोल के जाने माने हस्ती जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। तो सारी बातें हुई हैं। जैव विविधता किस तरह से पर्यावरण के साथ उसका एकदम एक चोली दामन का संबंध है, लेकिन जिस तरह से इस विविधता को हम अपने विकास के नाम पर, विकास के प्रयास पर और अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखमय और सुविधा युक्त बनाने के प्रयास से खत्म कर रहे हैं, इसको हानि पहुंचा रहे हैं। हमें ये पता नहीं हो पाया कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सबों के सह जीवन से हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। हमने देखा कि सरफराज सर ने अपने लेक्चर के अंत में धर्म के साथ अपनी बातों को जोड़ने का प्रयास किया है। मैं उन्हीं बातों को दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि शायद जैव विविधता की बात को स्वीकार करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस दोहे से सहजीवन जितना परिमार्जित होता है, व्याख्यायित होता है, मैं समझता हूं कि धर्म के मूल में हमको इन बातों को देखने की जरूरत है। आज फिर धर्मशास्त्र में ही कहा गया है, हितोपदेश में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दया परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यह भी जैव विविधता को ही परिभाषित है कि हम अपने साथ अपने पूरे पर्यावरण में, पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, आचरण करें, तो हमारा जीवन सुखमय और सानंद हो सकता है। लेकिन वैश्विक विकास के प्रयास में हम भूलते चले गए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पॉपुलेशन, ये तमाम बातें ऐसी जटिलताओं के साथ एक दूसरे से उलझ गई कि सहजीवन का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त सा होता है। मेरा महाविद्यालय पश्चिम चंपारण के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास है। मैं बता दूं कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि पेपर में जब वाल्मीकि नगर और बगहा की न्यूज हम देखते हैं तो उसमें दिखता है कि आज शेर ने बकरी चराने वाले को दबोच लिया, आज बाघ ने जंगल में घुसकर घास काटने वाली महिला की हत्या कर दी। तो आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसके रख रखाव और आवासन के लिए वनों की तेजी से कटाई हो। मैं अक्सर बोलता हूं अपने मित्रों के साथ कि जब भी चर्चा होती है कि जंगली पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, मैं कहता हूं कि नहीं, जंगली पशुओं का आतंक नहीं बढ़ रहा, बल्कि हम जंगली पशुओं की तरफ जा रहे और वो अपनी सुरक्षा में अपने हिंसात्मक प्रवृत्ति से हमारे ऊपर आक्रमण करते। तो जैव विविधता
की जो समस्या है, उन समस्याओं का मैं समझता हूं कि सार्थक समाधान तभी होगा जब हम अपनी आबादी को नियंत्रित करने का प्रयास। हमारी आबादी अनियंत्रित होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण और पर्यावरण संतुलन के प्रयास नहीं किए गए। जब से हमारी सृष्टि का संचरण शुरू हुआ है, हम समझते हैं कि सहजीवन का भाव बना रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षित होते गए, विवेकशील होते गए, हमारे अंदर से सहजीवन का भाव खत्म। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा भी जब देश गुलाम था तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय में भी पर्यावरण और जैव विविधता को मेंटेन करने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास को जनता के साथ, आबादी के साथ जोड़ने का काम नहीं। आज इन जनरल हमारे मन में, पूरी आबादी के मन में ये बात बैठ गई है कि अगर जैव विविधता की समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका समाधान का दायित्व सरकार, समाज का कुछ नहीं। तो सरकार तो हम बनाते, सरकार नीतियां बनाकर अपनी जवाबदेही को खत्म कर लेती। उन नीतियों के क्रियान्वयन में उसको प्रभावपूर्ण तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम नहीं। नतीजा है कि हम अपनी विवेकशीलता को ताक पे रखकर अपने विकास के प्रयास में कोई भी काम करने को तत्पर, जिससे हमारे आस पड़ोस में, हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव हैं, जाने अनजाने में उनकी हत्या हो। आप सभी जानकार और भूगोल और पर्यावरण के विद्वान लोग हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि आज कितना स्पीशीज हमारा जो है सो एक्सटिंक्ट हो गया है, इंडेंजर हो गया है। उसके संरक्षण की बात अब होती है, लेकिन हमको, आपको, सबको मिलकर ये प्रयास करने की जरूरत है कि हम शुरू में ही क्यों नहीं उसके संरक्षण की बात करें। जब तक ये बातें नहीं आएगी, पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण का एक जन आंदोलन नहीं प्रारंभ होगा। हम समझते हैं कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयास से यह रुकने वाला नहीं है। इस समस्या का माकूल समाधान तक हम पहुंचने वाले नहीं हैं और आने वाले जनरेशन को एक बड़े खतरे और एक बड़ी समस्या में हम छोड़कर जाने वाले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम मित्रों से एक बार फिर हम हृदय से साधुवाद देते हैं और आज के इस मौके से जुड़ने के लिए धन्यवाद देने के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो जहां हैं वहां जैव विविधता के स्थिरता को बनाने में अपनी सक्रिय सहयोग किस प्रकार आप सुनिश्चित कर सकते हैं, इसका प्रयास करें। एक समूह बनाएं ताकि वो समूह जैव विविधता की स्थिरता को बनाने का काम करे, लोगों को मोटिवेट करे। केवल सरकार और संस्था पे इन बातों को छोड़ने से हम समझते हैं कि हमारी ये समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाएगा और हम आने वाले समय में पर्यावरण की समस्या अलग है, प्रदूषण की समस्या अलग है, पॉपुलेशन की समस्या अलग है और ये जैव विविधता एक बड़ी समस्या बनकर हमारे समक्ष उपस्थित है। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। Thank you so much, sir. Hello. Hello. sir. Thank you so much, sir.
कुछ आवाज पर डिस्टरबेंस हो रही है, लग नहीं रहा है कि किधर से हो रही है, बट सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार की तरह आपने इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपने वक्तव्य के द्वारा 4 चांद लगा दिया है सर। आपने जो भी जैव विविधता के बारे में जो भी बातें कही हैं और जो रिक्वेस्ट किया है, वाकई वो बहुत ही जेन्युइन है। और इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा सर इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जहाँ पे वेबिनार से लोगों को एक उपसी हो गई है, बट हमारे इस वेबिनार में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की बात करें तो एक बार ये पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट थी वो 95 तक पहुंच गई थी, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ आवर ज्योग्राफियन प्रोफेसर रासबिहारी सर, प्रोफेसर सरफराज आलम सर, मैम कस्तूरी मैम, एसेट्रा। आज का ये जो पूरा सेशन था, इस सेशन में एक फ्रूटफुल रिजल्ट ये था कि आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के ऊपर जो हमें इस 2 घंटे या 2.5 घंटे के ऊपर सुनने को मिला, इस वेबिनार के थ्रू कहीं ना कहीं हम कुछ कंक्लूड करने की कंडीशन में आ गए। उस कंक्लूजन में सबसे पहला जो रोल प्ले किया है वो है सर ने, रविंद्र सर ने, जो हमारे परम गुरु भी हैं और साथ ही साथ इस महाविद्यालय के प्राचार्य भी। अब जैसा निहाल सर की बात है, निहाल सर ने रिक्वेस्ट किया है कि इस कार्यक्रम का वोट ऑफ थैंक्स मैं करूं, तो आई रियली फील वेरी लकी कि मुझे इस कार्यक्रम में वोट ऑफ थैंक्स करने का मौका मिला। और इस कार्यक्रम में जहां पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा शुरू से एक्साइटेड थे, उनके फोन आते थे कि मैम कार्यक्रम में ये लोग जुड़ रहे हैं ना, पक्का जुड़ रहे हैं ना। स्पेशली सरफराज सर, आपके लिए जो है फोन आया था, जो छोटे छोटे हमारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कि बीएचयू से सर आ रहे हैं, बीएचयू से सर प्रेजेंटेशन देंगे। और उन लोगों का पर्सनली फोन आया कि सर मैम हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और फिर से बोलिएगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन के इस क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस कार्यक्रम के पैट्रन इन चीफ प्रोफेसर हनुमान प्रशांत पांडे सर का, जो कि वाइस चांसलर है बिहार यूनिवर्सिटी से। उनका अप्रत्यक्ष सहयोग हमारे इस वेबिनार में हमेशा मिलता रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर आरबी सिंह सर का, जो कहीं ना कहीं कैजुअलिटी के कारण इस कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं ले पाए, परंतु उन्होंने अपनी बातों को निहाल अहमद सर के थ्रू हम सबके समक्ष रखा। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम को सफलता के श्रेय में के क्रम में आगे बढ़ाने वाले प्रोफेसर सरफराज आलम सर को, जो बीएचयू वाराणसी से हैं। सर आपसे एक लगाव इसलिए भी हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है, वहाँ पे 2 साल एमएमबी में पढ़ाया भी है, तो वहाँ से जो एक ट्रेनिंग मिलती है वो कहीं ना कहीं आपके उस लेक्चर से वो चीजें जैसे एक हुआ ना, ये एक फिर से वो चीजों की याद आ गई। थैंक यू सो मच सर, आपका लेक्चर और आपकी जो स्टडी थी टोटल, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम लोग भी कैसे स्टडी प्लान कर सकते हैं। और उस बायोडाइवर्सिटी पे जो टोटल आपका लेक्चर था वो बहुत ही सिस्टमेटिक और इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज के स्पेशल जो हमारे गेस्ट हैं, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर वेस्ट बंगाल से जुड़ने वाली कस्तूरी मैम का, जो कि हमारे साथ इस समय भी मौजूद है। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टूडेंट को बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो सिस्टमेटिक चीजें बताई हैं, एक्सप्लेन की हैं, उसके लिए हमारा हर स्टूडेंट बहुत ही आभार व्यक्त कर रहा है आपका। सर आपको बहुत बहुत, मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्राचार्य सर को, जो कि किसी भी कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, कोई एक नया वेबिनार हो, उस बारे में अगर हम लोग शुरुआत कर सकते हैं तो वो इतना अच्छा दिशा निर्देशन देते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि वो अर्थशास्त्र विषय के हैं कि वो सारे के सारे विषय पे एक समान जो है अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, हम सबको मोटिवेट करते रहते हैं और हम लोगों को नया नया कुछ सीखने और करने के लिए हमेशा उत्साहित करते हैं। सर आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के कन्वेनर और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफलता से संचालित करने वाले निहाल सर का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी ही महाविद्यालय के और सब इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले
डॉक्टर संदीप कुमार सिंह सर का, डॉक्टर अजय कुमार जी का, रमेश सर, राकेश सर, धर्मेश सर, गजेंद्र सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की इस क्रम में मैं सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद देना चाहूंगी तो वो देना चाहूंगी डॉक्टर रमेश्वर प्रसाद सिंह सर का। सर आप वास्तव में इस पूरे के पूरे वेबिनार में एक गार्जियन के समान है। छोटी सी भी समस्या होती है तो अगर आपके पास जाए तो पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल ग्रुप से हम सबको सपोर्ट देते हैं। सर आज ही एक बात हुई कि सर ये जो लिंक है वो बहुत अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा, तो सर ने अपने 30 जो ग्रुप है, इतने बड़े बड़े ग्रुप है, तुरंत पर्सनली जो है मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और सब लोगों को हम लोगों के साथ जोड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साथ स्क्रीन पे रहने वाले नीलांबरी मैम को। मैम हम लोग के साथ प्रोग्राम में शुरू से जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शुरू से जुड़ने वाली तुलिका मैम, इंद्रानी मैम, ममता जी, मिहिर झा सर, प्रज्ञा सिंह, प्रियंका कुमारी, राजकुमार, रश्मि मैम, रोशन कुमार, रितेश कुमार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के साथ आप शुरू से लेकर अभी तक जुड़े रहे। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न जो है आप लिख कर निहाल सर को दे सकते हैं। समय कम होने के कारण हम बहुत से प्रश्नों को नहीं ले पाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर दीनानाथ सर को जो कि हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और साथ ही साथ व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि इस कार्यक्रम में रह गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत। ये रेखा, जी सर। हाँ सर, ये सर्टिफिकेट कल से परसों तक सब लोगों को मिल जाएगा, ये भी घोषणा कर। ओके सर, जैसा कि प्रिंसिपल सर का निर्देश है, हेलो, इस कार्यक्रम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हेलो, जी 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 सर। सबसे पहले तो धन्यवाद प्रचार महोदय के देते हैं जिन्होंने यह प्लेटफॉर्म तैयार किया। ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करते तो सारे अच्छे लोग भी आकर इसी कड़ी में सारे टीम को धन्यवाद देते हैं। सबसे अधिक धन्यवाद हम उस सारे मेंबर्स को दिए जो मैं हमारे रिक्वेस्ट पर आज पूरे बहुत बड़ी मीडिया से यहाँ उपस्थित में राजा कलर नहीं आए। मोहम्मद इतिहास साहब आए थे जो मगध यूनिवर्सिटी के फरमान भाई सांसद हैं जामिया मिलिया से। ये सारे लोग आए थे। सभी लोगों को मैं इंडियन जगह की ओर से सारे लोगों को धन्यवाद और वेलकम करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू रामेश्वर सर। एक घोषणा सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि सारे पार्टिसिपेंट्स को जो ई सर्टिफिकेट है इस प्रोग्राम से संबंधित कल से परसों तक आप सबके मध्य बढ़ जाएगा। और एक फीडबैक फॉर्म है जो कि प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। जी आपकी इजाजत हो तो प्रोग्राम समाप्ति की घोषणा कीजिए। जी मैम। थैंक यू एवरीवन। आप सबके पार्टिसिपेंट आपने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हमारे इस कार्यक्रम में, इस वेबिनार में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ मीडिया से जुड़े लोग हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर ये रेखा, जी सर, ये फीडबैक फॉर्म लोग कह रहे हैं शेयर कर दो। जी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप अपना जो नेम है और कॉलेज नेम है और आपका जो डेजिग्नेशन है उसको लिख के आप चैट बॉक्स में डाल दें। हम आपको फीडबैक फॉर्म कुछ देर में उपलब्ध करा देते हैं। हाँ, लिफ्ट करा दो।
सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ सूचना देनी होगी तो आप निहाल सर को जो है दे सकते हैं। निहाल सर जो है आप लोग सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। आप सबका अटेंडेंस जो है रिकॉर्डेड है। हमारे साथ सोनू कुमार जर्नलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। हेलो महापुरुष जब आते हैं लोग देखते हैं कि कहाँ जाना उस समय भगवान देता है। हम थोड़ा सा इनका जन्म स्थान है बैकग्राउंड थोड़ा बता देता है कि कोलकाता से ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर मात्र 60 कोलकाता से 60 किलोमीटर के अंदर में 3 महापुरुष का जन्म हुआ। एक किसी भी पार्टिसिपेंट को अगर सर्टिफिकेट संबंधी कोई भी समस्या है या कोई भी बात करनी है तो आप निहाल से बात कर सकते हैं। और 10 किलोमीटर जाने से ही बेसिंग ग्राम विद्यासागर माता एक ही जाने में 3 महापुरुष और इधर महासागर और कोलकाता में स्वामी विवेकानंद। राममोहन ने शुरू किया था समाज सुधार करना, जितना प्रथाएं आप दे रहे कुप्रथाएं दे रहे इसके साथ शुरू किए ये तो संतुलित हुआ कहाँ आता हजारी साहब ने कुछ कार्य किया है। रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद इनके एकदम फाइनेस्ट रूप दिए। नारी शिक्षा उन्होंने शुरू किए थे राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद उन्हीं ने एजुकेशन के लिए इतना कहते हैं उन्होंने भारतीय विविधता को हमारे देश में लाके नारी शिक्षा का प्रचलन किए, प्रैक्टिकल रूप दिए थे। स्वामी जी का जो कर्म है वो प्रैक्टिकल वेदांत, प्रैक्टिकल रूप, वास्तविक रूप से श्री रामकृष्ण देव अपने नहीं सीखा ये रोटी कपड़ा मकान के लिए ये दिशा हमको नहीं चाहिए, ये अपराध दिशा हमको नहीं चाहिए, हमको पढ़ा दिशा चाहिए। किंतु साथ साथ आप देखिएगा उनके जीवन में उन्होंने कोशिश कर रहा है राजकुमार लोगों ने नहीं तुम लिखा पढ़ा सीखो तुमको पढ़ना है, उन्होंने अपने टीचिंग कर रहा है। पूरा पूरी शिक्षा नहीं दे पा रहा है लेकिन शिक्षा के व्यवहार में थे। स्वामी विवेकानंद कैसे जब बात कर रहा है बोले नहीं तुम लोग इंग्लिश में बात करो हम सुनेगा, अरे इंग्लिश के भी फेवर में थे। शारदा माँ इंग्लिश का फेवर में थे। जब सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल चालू की उनका स्टूडेंट नहीं मिल रहा था, स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों के बोल बोल के कुछ लड़कियों को दिए थी और शारदा माँ क्या करती थी